Hello everyone, good afternoon. Good afternoon everyone, good afternoon. I hope you all can hear me and see me clearly. Can you please write yes in the chat? Okay, thanks for the confirmation everyone. Good afternoon. I can see Arpit sir has also joined us. Arpit sir, I've sent you a request. Please join in the stage. Sir, Yes. can you hear me? Yes, yes. Just a minute. Just a Sure, minute. you can take 2 minutes to settle down and then we'll start the session. Yeah. The frame is visible. Voice is audible. Yes, sir, you are clearly visible. You are audible. Perfect. So I'll just set up the frame and we'll get back in a couple of minutes. Sure. So, good afternoon, everyone. Welcome to the afternoon trading session. From now onwards, we won't have any expiries on Monday. I guess everybody knows that. But we are bringing in something soon. हमारा बस final discussion होना बाकी है. We'll be able to update you by today or tomorrow morning session में. We'll update you that how and what we are going to do. And for this session, we'll hope ki we can get a trade in any of the indexes or any stock options or stock trades. That is something which you're hoping. We'll give you a very quick market outlook for the entire week in all the indexes and how will the Nifty and Sensex turn out for the end of the week, Thursday and Friday, जो हमारी दो expiries हैं. Please note, Wednesday को we have a leave because of the elections. So Wednesday ko there will be no sessions in morning and afternoon. And just like always, we have Arpit Beriwal sir with us. Every day we have a different expert. Today we have Arpit sir who will be taking the stage and sharing a lot of knowledge with everyone. Arpit sir, over to Yeah. Very good afternoon, guys. Welcome to Bankex and Mid Cap Expiry. So, as rightly mentioned by Anuj, this will be the last week for the weekly contracts of Bankex, Mid Cap, Fin Nifty. Bank Nifty, we already discussed last week, was the last weekly expiry. So, all in all, starting with first, we'll talk about Nifty, Bank Nifty, followed by Bankex, followed by market outlook. Which sectors are looking good, which sectors are in pain, what are the BTST ideas, opportunity, or stock ideas that are looking good from positional wise 10 to 15 days or from a 5 to 7 days view. So all in all, we'll discuss about a lot of things. So first, starting with first come first. First is Nifty, as Nifty has been the headline index. So first we'll talk about Nifty. And if we talk about Nifty, so from past almost 7 weeks, I'll open up the Nifty weekly chart structure first. Yeah. Just want to confirm the screen is visible, right? Yes, sir. We can see the Nifty 50 index, but we can see the 1 day view. Yeah, I'm just changing it to weekly. Okay. Yes. So if I look at the chart of weekly, this is a Nifty weekly chart of last 7 to 8 weeks, and continuously Nifty is forming low rise, low lows on weekly time frame. That clearly indicates कि bears जो है वो totally control में है. We have seen almost a decent correction of 10% from its all-time high. That roughly is around 2,500 points. लास्ट वीक हमने निफ्टी में फ्रेश ब्रेकडाउन देखा था 23,800 के नीचे. आज वापस हमने फ्लैट ओपनिंग देखी, बट अगेन वी हैव सीन अ फॉलो अप सेलिंग. So Nifty is like a clear structure of Dow theory, that is lower as lower structure intact है. इमीडिएट बेसिस पे 23,650 23,701 सप्लाई जोन है निफ्टी में. जब तक इसके नीचे रहता है हमारा स्टैंड नेगेटिव ही रहेगा. 23,333, 23,333 and then 23,200 के लिए. So all in from Nifty angle, Nifty is in clearly downtrend. जब तक 23,550 23,600 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है, हमारा सेल ऑन बाउंस का स्टैंड ही रहेगा निफ्टी में. नीचे में सपोर्ट है 23,333 and then 23,200. So this is talk about Nifty. Now moving to Bank Nifty. Bank Nifty अगर देखें तो ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है. We have seen last week very good momentum. Couple of days we have seen a good swings, but post that if we see on the daily chart, बैंक निफ्टी ब्रॉडर रेंज में ट्रेड कर रहा है काफी टाइम से. आज हमने थोड़ा सा कूल ऑफ देखा, बट 50,000 जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी उसको रिस्पेक्ट कर रहा है. सो बैंक निफ्टी का बायस अगर देखें तो ओवरऑल सेल ऑन बाउंस है, बट ऑन द अपर बैंड, एंड दैट इज अ वेरी डिफरेंस बिटवीन निफ्टी टू बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी रिलेटिवली थोड़ा ग्रेजुअल गिर रहा है. आज भी देखें, सो दिस इज द वास्ट डिफरेंस. निफ्टी इज डाउन बाय 0.5%, रफली 120 पॉइंट्स,
बैंक निफ्टी is up by 0.2%, that is roughly around 120-150 points. And ये नेचर रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी का. बट बैंक निफ्टी में भी जब तक 50,600 स्पॉट लेवल्स इमीडिएट इंट्राडे बेसिस पे जब तक नेगेटिव रहता है तब तक हमारा सेल ऑन बाउंस स्टैंड रहेगा. बट पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे में देखे तो लेट मी गो ऑन टू द 15-minute chart. And why I'm talking about Bank Nifty, because we'll get cues from here for Bankex also, because Bankex and Bank Nifty has almost 95% correlation. So Bank Nifty पिछले almost 1.5-2 घंटे से एक रेंज में है, ऊपर में 50,450, नीचे में 50,200 की एक रेंज में. अभी हमने थोड़ा सा ब्रेकडाउन देखा है बैंक निफ्टी में, बट स्टिल मोमेंटम ज्यादा है. So now coming back to our expiry focus, that is Bankex. So let me pull up the chart for Bankex. And if I see the Bankex chart, Bankex is quoting around 57,400. अगर हम देखें बेसिस पे डेली स्केल में भी सेम बैंक निफ्टी जैसा ही है. Bankex की इमीडिएट रेंज है 57,200 से लेके 57,250 से लेके ऊपर 57,550. अभी चल रहा है 57,350, 57,300, 350 के अराउंड. सो इमीडिएट रेंज है 57,200, नीचे सपोर्ट है, ऊपर में 57,450, 500 हर्डल्स हुआ. दिस इज अ सेटअप फॉर बैंकेक्स. सिंस मॉर्निंग हम बैंकेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी में बेरिश ही प्ले कर रहे हैं, पुट ही प्ले कर रहे हैं. बट आज ऑप्शन वाइज जो मोमेंटम है बैंकेक्स और बैंक निफ्टी में थोड़ा ग्रेजुअली स्लो है. सो विल सी लेवल वाइज में 57,333 अभी चल रहा है बैंकेक्स. 57,200 सपोर्ट जोन है, ऊपर में 57,450. ये 100 पॉइंट्स की दोनों तरफ रेंज है. तो इसको हमें दो तरफ से या तो प्ले करना होगा, या तो हम वेट करेंगे थोड़े से बाउंस का. थोड़ा सा बाउंस अगर आता है 57,400 के अराउंड, सो वील यूज दैट एज अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी और विल बाय पुट्स. सो एज ऑफ नाउ फॉर बैंकेक्स द पुट दैट वी आर ट्रैकिंग इज 57,500. सो दिस इज द पुट दैट वी आर ट्रैकिंग फॉर बैंकेक्स टू प्ले द डाउन स्विंग. सो लेवल्स हमने डिस्कस किए. स्ट्राइक व्हिच इज ऑन रडार इज 57,500 बैंकेक्स पुट. अभी अराउंड 133-135 के अराउंड चल रहा है. So we'll review that, we'll look at the setup, and as per the setup, as per the favorable entry point, we'll try to make the most of it. And in the meantime, we'll look for the overall market setup also, and we'll discuss. So I think Anuj, the levels are clear, right? Bankex 57,500 put we are tracking. Right now it's quoting around 130-135 levels. Our bias is slightly negative in Bankex and in Bank Nifty too, but thoda slow momentum hai, so we will use for some bounce to play that swing, and we'll see. In the meantime, if you talk about overall market breadth, just want to confirm, Anuj, the levels are clear, right? Yes, sir, the levels are clear. Perfect. So strike have skills. We'll see how to play that strike as per the market setup wise. In the meantime, if we talk about overall market breadth, market structure wise, barely except few selective sectors or selective stocks, the broader market has been in pain, and that we have clearly seen. Whether it's the auto stocks, whether it's the energy stocks, whether it's the CPSE stocks. So all in all, current market phase jo hai, more or less is more of an intraday basis. If we see, there was a sharp cut in IGL and MGL post the news outcome. Along with, there was a sharp uptick in the metal stocks post the China boost. So it's more or less quite a lot of volatility is than this indices in this stock especially. And we have to be very much careful while playing the positions overnight. सो ओवरनाइट में हमेशा ध्यान रखना होगा कि हम अब जो पोजीशंस ले रहे हैं उसका रिजल्ट अगर है नहीं है तो वो देखना पड़ेगा. एंड लाइकवाइज लॉट ऑफ वोलेटिलिटी इज देयर. सो हैविंग सेड दैट, बैंकेक्स वी हैव डिस्कस्ड, विल वेट फॉर द सेटअप. इन द मीन टाइम विल लुक फॉर स्टॉक्स आल्सो जो अच्छे लग रहे हैं, बट वी कैन टेक कपल ऑफ स्टॉक क्वेरीज एंड एज पर द सेटअप वाइज 2-3 आइडियाज जो पोजिशनली अच्छे लग रहे हैं विल अपडेट ऑन इट. ऑल्सो BTST आइडियाज जो लग रहे हैं कि हमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है और मार्केट के सेटअप के हिसाब से हमें प्ले कर सकते हैं, तो विल अपडेट ऑन इट. So the first query which we have is Renaissance Global. Renaissance Global, let me have a look at the chart. Renaissance Global. Yeah. Can you just tell me what is the price? RENAISSANCE Global. Yeah. Renaissance Global. Yeah. The price is, let me have a look. What is the buying price? They've just asked for your opinion on it. So if I see the setup wise, stock is forming lower as from past 6-7 days. जहाँ से रैली शुरू हुई थी around 168, 167 के अराउंड, वहां पे अभी वापस आया है.
एंड आई थिंक इमीडिएट बेसिस 167 और 68 सपोर्ट जोन है. अगर कोई होल्ड कर रहा है तो बेटर टू होल्ड द स्टॉक विद स्टॉप लॉस ऑफ 167. अपसाइड में 175 178 हर्डल जोन है. सो आई थिंक बायस मिक्स है. लो राइज बना रहे तो विल वेट फॉर द रिवर्सल, बट सपोर्ट जोन के पास में. सो आई डोंट थिंक दिस लेवल शुड बी एग्जिट पॉइंट. बेटर टू वेट फॉर रिवर्सल अबव 175. So Force Motors. Force Motors. Overall, auto stacks has been quite a dampen in last couple of weeks. But Force Motors also, if we see the chart wise, structure is in clearly downtrend. It's trading in a broader range between 6,200 to 7,000 levels. Weekly daily scale पर भी डाउन ट्रेंड में है. सो आई थिंक 6,850 6,900 एक मेजर सप्लाई जोन है. जब तक इसके ऊपर बंद नहीं आता तब तक बायस वुड बी नेगेटिव. So better to wait. 6,900 is an important level. उसके ऊपर closing आएगा तभी there would be some reversal on the chart. Sir, BDL 55 stock at 1270. Should I add more? 1270. 1270. Okay. So if you see over the chart of BDL, I think from past almost 3 months, the stock has been clear downtrend. And जैसे जैसे थोड़े bounces आ रहे हैं वापस वो bounce hold down to हो रहे हैं and the downtrend is continues. If you see the weekly chart from past almost 2 to 3 months, it is forming lower highs. So as of now, better to wait. Don't add it because कभी भी गिरते हुए stocks में हमें add नहीं करना है. अगर वो trading bet है तो और करना है तो हमें stop loss mechanism follow करना है. Immediate basis पे 1050 जब तक 1050 के ऊपर बंद नहीं आता है, bias would be negative. So better to wait. Don't try to add because counter गिर रहा है. So better to wait. 1050 की closing के ऊपर ही थोड़ा सा bounce back आ सकता है. So better to wait. Sir, BSE. BSE overall, if you see in this fall, in last couple of months, week fall, the outliner sector has been the capital market theme itself, whether it's exchanges, whether it's the intermediaries, whether it's the exchange itself. So BSE chart wise is very strong. On monthly scale, it's very strong. On weekly, also it's consolidating. Daily में भी market की इतनी weakness के बाद वो अपने stock को hold किया हुआ है. So I think जो stock का base है वो ऊपर की तरफ shift हो गया है. 4,400 4,450 एक major base बन गया है BSE के लिए. ऊपर में 4,850 5,000 के लिए. सो पोजिशनली पॉजिटिव है काफी सेटअप. इमीडिएट बेसिस पे 4,450 4,500 का सपोर्ट जोन है. ऊपर में 4,850 4,900 के लिए बायस इज पॉजिटिव. Coming back to just a second on the Bankex trade, let me have a look if we can get some opportunity and if we can try to play the swing through it. So let me pull up the Bank Nifty and Bankex chart. If there is any reversal. Since morning, post 10:15, today it has been not a major day for option buyers, and clearly we have seen in the grip of the option writers. लास्ट वीक हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा था, स्पेशली ट्यूसडे वेडनेसडे को जो काफी फ्री फ्लो हमने देखा था निफ्टी बैंक निफ्टी एंड अक्रॉस ऑल द इंडाइसेस. थर्सडे एक म्यूटेड था एंड आज भी निफ्टी में रिलेटिवली पेन है, बट बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो इट्स अ पॉजिटिव टेरिटरी. सो अभी भी रेंज वाइज में जो हम पुट देख रहे हैं 57,500 का बैंकेक्स का, इट्स अराउंड 110 112 लेवल्स. एज ऑफ नाउ देयर इज नो मेजर स्विंग. At the same time, also tracking call also if you can play some swing, but as of now there is no major setup grade. So we'll wait for the reversal or we'll wait for the entry point, and जैसे अपॉर्चुनिटी लगेगी we'll update on it. Why I'm saying this because ये पुट अगर हम प्रीमियम देखते हैं तो हमें काफी चीजें समझ में भी आती है कि कैसे प्रीमियम बिहेव कर रहे हैं. 135 140 वाला अभी हुआ 110. So definitely we've seen a recovery of 60 to 70 points, but let's see if there is any swing or no. We'll update on it. Coming back to that, couple of ideas that are looking good, and one is from a positional wise also Zomato. So if we see Zomato, we have been quite bullish from last couple of weeks. If we see overall, whether it's a weekly chart or the daily chart, एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ था 240 245 का अराउंड, एंड स्लोली स्टेडीली पोस्ट द आउटकम ऑफ स्वीगी आईपीओ आल्सो स्टॉक इज हेडिंग नॉर्थवर्ड. सो फ्रॉम अ पोजीशनल वाइज आल्सो जोमेटो का एक अच्छा बेस बन रहा है अराउंड 255 258 लेवल्स के अराउंड. So Zomato looks good from 4 to 5 7 days perspective. 258 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं. ऊपर में धीरे धीरे 278 एंड देन 285 के लिए Zomato is one of the CDI ideas that will look good जो आप होल्ड कर सकते हैं. Also one more thing I would like to add,
ये मार्केट में जो रिलेटिवली गिरे कम है, एंड जब मार्केट स्टेबल होएगा, दैट वुड बी द सेक्टर टू लुक आउट फॉर. सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज गोइंग विद द स्ट्रेंथ, एंड हमें वो स्ट्रेंथ को प्ले करना है. सो फर्स्ट सीरिया आइडिया वी हैव शेयर, लेवल्स वी हैव मेंशन, 258 इज द स्टॉप लॉस, एंड अपसाइड में 278 एंड देन 288 के टारगेट के लिए. Guys, it's a request that please don't spam your queries. We will take them one by one. Yeah, Anuj, we can take a couple of queries because as of now, there is no major setup in the option buying setup. In the meantime, we can definitely take queries. Sir, your view on Devyani? Devyani International. Let's have a look. Devyani, if you see from a daily perspective, stock is in downtrend. एक major top बनाया था around 210 levels के around, and since then we have seen a corrective phase. Immediate basis पे 15 दिन पहले around 160 एक support जो था वहां से pull back आया था, but daily scale पे as of now downtrend ही चल रहा है. So I think जब तक 167, 168 के ऊपर closing नहीं आती है, better to wait. It is still falling, so better for some reversal on the daily and weekly chart, and तभी हमारा buy रहेगा. सपोर्ट 155 का है, अपसाइड में 168 का ऑर्डर. सर व्यू ऑन Anuj, I can't hear you. I think you're on mute. Sir, I said view on Suzlon. Suzlon has been in news from quarter long time, and पिछले अगर 2 से 3 हफ्ते का हम चार्ट देखें, so अच्छा खासा करेक्टिव मूव हमने देखा है. But I think setup wise, if we see, let me open up the weekly chart. ये इसकी एक रैली शुरू हुई थी मे सीरीज में अराउंड 50-55 के लेवल से, एंड फ्रॉम देयर वी हैव सीन अ वन वे अप टुवर्ड्स 80 लेवल्स. आई थिंक ऑन द वीकली स्केल द सपोर्ट जोन इज इट्स नियर वेरी मेजर सपोर्ट जोन, एंड रिस्क रिवॉर्ड इज फेवरेबल. सो आई थिंक 53-54 एक मेजर सपोर्ट जोन है, ऊपर में 65-68 का हर्डल जोन है. सो फ्रॉम करेंट जंक्शन अगर पोजिशनली किसी को बाय करना है, आप बाय कर सकते हैं. 52 का आप एसएल रखिए, ऊपर में 64 और 69 के टारगेट के लिए. Risk reward is favorable with a stop loss of 52. So Sula Vineyard. Post the if we see the outcome of sharp up move, weekly scale is clearly down. Lower rise का structure intact. There is no major reversal. 410 एक immediate hurdle zone है weekly scale पे. जब तक वो surpass नहीं होता है, buys would be negative. Better to wait or better to exit on bounce near 410-415 levels. Coming back to the index trade, Bank Nifty and Bankex, it is clearly moving in a range. So we are tracking the put जो 57,500 का चल रहा है around 110-111 levels. But as of now, there is no major swings as such. Along with that, couple of things that we need to keep in mind. Just in the meantime, as we are discussing, Wednesday we have an off for election, and we'll have a lot of volatility post that also. So guys, this week itself will be quite a crucial week itself for the market perspective. Also, overnight आप जो position carry कर रहे हैं, especially on index, please make sure आप hedge रखिए, and you see just the impact on the stocks on daily basis की एक news negative या एक news positive, we see a massive move of 8-10% of the stocks. So make sure please manage your risk. That's very important. Because market में current market जो breadth है, 100 counter में 70 stocks are in downtrend, barely 15-20 counters in uptrend. So हमें market के setup के हिसाब से play करना है. Queries हम जैसे solve कर ही रहे, उसके बीच में एक Zomato idea CDI जो एक दिया है. BTST आइडिया हम वेट कर रहे हैं बिकॉज मार्केट में उतनी टेम्पटिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है. सेटअप अच्छा रहेगा तभी हम शेयर करेंगे, बिकॉज वी वांट दैट हम अगर दे तो आपको उसमें पैसा बने, या तो छोटा स्टॉप लॉस वर्क विद. सो लेट्स सी बैंकेक्स ट्रेड, इट्स स्टिल इन अ रेंज. अगर कंफर्ट रहेगा तभी हम देंगे. इन द मीन टाइम सर can you please repeat the CDI for Zomato once? Yeah, so levels I'll repeat. Zomato, not today only, from past couple of weeks we have been pushing it around, and setup wise also we see it's very strong. So weekly scale पे 245-250 के around एक major base बना लिया है. Daily scale पे slowly steadily it's moving higher. So 258 is a stop loss level. On the upside 278 and then 288 is a positional level. So अगर Zomato आपको buy करना है तो 258 के एसएल से आप buy कर सकते हैं. Apart from that, a very selective opportunity we are seeing on the positive side in stocks. So we are waiting. Also BTST idea also we are waiting कि अगर setup अच्छा लगेगा तो हम attempt कर सकते हैं. One stock
along with that, that is looking good is from the chemical spaces, Coromandel. So Coromandel अगर हम चार्ट देखें तो मंथली स्केल काफी स्ट्रॉन्ग है, वीकली स्केल पे भी नीचे से रिकवरी देखी है, और डेली स्केल पे फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया अराउंड 1680 लेवल्स. सो कोरोमंडल विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हो. 1670 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, ऊपर में 1760 और फिर 1790 के टारगेट के लिए. सो जोमेटो वी हैव शेयर्ड द लेवल्स एंड सेकंड वन इज कोरोमंडल. 1670 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, ऊपर में 1760 और फिर 1790 के लेवल्स के लिए बाय कर सकते हैं कोरोमंडल. The levels are clear, right, Anuj? Yes, sir. It's clear now. Perfect. Sir, Nifty 23,600. 23. जाएगा क्या? 23. 600. Okay, right now it's quoting around 23,242. So if I see overall setup wise, the bigger trend of the indices is still in pain, and I don't think so there would be very much upside. Also, having said that, वो जो व्यू है वो मैटर है कि इंपॉर्टेंट है समझना है कि वो एक दिन के लिए व्यू है कि वो 10 दिन का व्यू है. सो आई थिंक फिन निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है, जैसे बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है. ऊपर में 23,600 23,800 का हर्डल जोन है, नीचे में 23,200 का सपोर्ट जोन है. एज ऑफ नाउ हमारा स्टैंस नेगेटिव ही है, सो विल गो विद द बिगर स्टैंस नेगेटिव. 23,400 के ऊपर क्लोजिंग आती तभी हमें हमारा स्टैंस चेंज होगा, बट ओवरऑल बायस विल बी नेगेटिव फॉर फिन निफ्टी, फॉर बैंक निफ्टी एंड फॉर निफ्टी. So can you repeat the Nifty support and resistance once? Okay. Nifty, if we say from an immediate basis, 23,600 is a major resistance level. 23,600, I'll repeat. नीचे में support है 23,333, that is election day high, and then 23,200. So 23,333 to 23,600 is the immediate support and resistance. Positional 23,800. जब तक 23,800 के नीचे निफ्टी है हमारा बाइस नेगेटिव ही रहेगा. नीचे में सपोर्ट है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया 23,333, 23,200 एंड देन पोजिशनली 23,000 लेवल्स. And as we are seeing within that index, especially Nifty, we see every day some other sector is cooling off, and because of which हमें वो impact दिख रहा है. जैसे आज मेजर ड्राइवर जो रहा है डाउनसाइड की तरफ वो है निफ्टी आईटी, जिसके वजह से हमने मेजर पेन देखा है. एट द सेम टाइम बैंकिंग स्टॉक्स में रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस है, बट सेम टाइम वहां पे हमने मोमेंटम नहीं देखा है. सो दिस हैज बीन द नेचर ऑफ द मार्केट फ्रॉम पास्ट couple of days, couple of weeks. And if you see, Nifty is down more as compared to Bank Nifty from its all-time high. But how is the nature of the market, and जो मार्केट का सेटअप है हमें उसके हिसाब से ही प्ले करना है. आज सुबह से हम देख रहे हैं कि मेनली बैंक निफ्टी और बैंकेक्स एक रेंज में ही फंसे हुए. एक स्टार्टिंग में हमने मूवमेंट देखा था, बट पोस्ट दैट इट हैज बीन कंसोलिडेटेड. जो पुट भी हम बैंकेक्स का देख रहे हैं अभी भी 109 110 के अराउंड चल रहा है, बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो मेजर थ्रस्ट, देयर इज नो मेजर मोमेंटम. दैट्स व्हाई वी आर वेटिंग, बिकॉज़ वी आर नॉट इन एनी रश टू गिव द ट्रेड्स. लास्ट वीक हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा था, अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी देखी थी, बट टुडे एज ऑफ नाउ वी आर लुकिंग एट द सेटअप. And if we see the intraday chart also, that clearly shows that momentum is totally missing. Having said that, if there is any opportunity, we'll definitely update on it. हमारा bias slightly negative है for today's expiry, and आप देखेंगे तो setup wise में भी एक range में ही अटका हुआ है Bankex and Bank Nifty. Sir, your view on ACC? ACC Siemens stocks has been quite volatile in the last couple of days. थोड़े सिलेक्टिव स्टॉक्स में मोमेंटम था, बट बाकी स्टॉक्स में डाउन ट्रेंड थे. सो रैमको सीमेंस वाज इन स्ट्रांग अप ट्रेंड, बट एसीसी ग्रासिम वाज इन डाउन ट्रेंड. सो एसीसी का हम चार्ट स्ट्रक्चर देखिए तो डेली स्केल पे लोअर राइज का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है. डेली स्केल पे अराउंड वो प्रीवियस सपोर्ट जोन के अराउंड आया है 2150 2160 के अराउंड, बट एज ऑफ नाउ स्टिल लोअर राइज बना रहा है. सो आई थिंक जब तक 2250 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है तब तक स्टैंस विल बी नेगेटिव, बिकॉज द बिगर ट्रेंड ऑफ द स्टॉक इज इन पेन. सो कोई भी बाउंस बैक मूव आता है टुवर्ड्स 2230 2260 लेवल्स, बेटर टू एग्जिट दिस स्टॉक. Sir, please suggest now NBCC buy short term or not? Buy short term. So short term, if I see that definition is quite vague, but if I just look at the purely on the weekly chart perspective, let me have a look
how is the chart option? So I think from where the rally started, couple of weeks back, around 85 levels, it moved towards 120 levels. Now again, it's back to its previous support zone. Weekly scale पे भी low rise बना रहे हैं. Daily scale में around sideways हो गया है. But I would still wait because this space as a whole, जो पूरा space है ये defense, railway stocks and infra stocks एक range में फंस गया है. 92 एक important level है. 92 निकलता है तभी हमें bounce back move मिल सकता है. तब तक wait करना चाहिए. और अगर पहले से कोई होल्ड कर रहा है तो 85 आप लेवल ध्यान रखिए क्लोजिंग बेसिस पे. 85 इज अ मेजर सपोर्ट जोन फॉर दिस स्टॉक. उसके नीचे फ्रेश वीकनेस रहेगी. सो जो पोजीशंस कैरी कर रहे हैं 85 का आप स्टॉप लॉस रखें. फ्रेश जिसको ऐड करना है 92 लेवल्स के ऊपर आप ऐड करें. Sir, next we have is Himad Singh ka CD. I don't know how to pronounce this one. Himad Singh CD, yes. If I look at the weekly chart, overall एक range में है. Buying at 155. 155. So I think the buying relatively is better because आपने lower band में buy किया हुआ है. So you can continue to hold this stock. Upper band में hurdle है 163 and then 170 levels. So I think around 170 would be a good booking zone. So 168 से 170 में book कर सकते हैं. नीचे stop loss आप रखें 152 का. Already buying price favorable में है. So better to hold and instead of looking for new opportunities, hold this stock. 152 का आप SL रखें. ऊपर में 163 and then 168 के target. So guys, we have initiated one CDI call and we don't have any BTST as of now. We're still tracking. So do we have any chance So for the thing is, Bankex trade? Issue is over Bankex. If you see, it's clearly in sideways, and I just don't want to give the trade on if there is no momentum. That's the main reason. That's why we are refraining. जो put हम देख रहे थे वो 120-30 वाला भी 95 हुआ है. जो call हम देख रहे थे वो 95 वाला 105 हुआ है. So broadly today the writing has been the grip has been for the option writers, and so far as the story. So better to I think avoid because there is no major thrust. Last में हमने थोड़ा सा अभी uptick देखा है, but important is the bigger trend is in downtrend. That's why we are refraining to change our stance. So as of now there is no major trade for the index. Having said that, this is the last weekly for Bankex and midcap. Tomorrow we'll have Fin Nifty. That will be the last weekly. And going forward for this month, we'll have all the monthly contracts for next month because that will be the last week for the month itself. But going forward, that is the theme of this thing. Apart from that, Zomato and Coromandel, we have shared the stock ideas. BTST also we haven't any share because there is no major opportunity that we are looking out for. So that is there. Anuj, we can take couple of more queries and then accordingly we can close our session. I guess we are almost at the end of the session. We'll take two queries. Sure. RR cables and SBI card. So first I'll look at the SBI card. Yeah. If I look at the chart of SBI, overall stock एक sideways to downtrend में ही है. पिछले 3 महीने से 4 महीने से एक मेजर सपोर्ट जोन है अराउंड 660 650 के अराउंड. वहां से हमने अपसाइड देखते हैं बट एज ऑफ नाउ चार्ट पे कोई रिवर्सल नहीं. सो आई थिंक 690 एक मेजर सप्लाई जोन है. जब तक 690 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है बेटर टू वेट. नीचे में सपोर्ट है 660 का. साइडवेज टू नेगेटिव काउंटर है. दूसरा आपने स्टॉक बोला आरआर केबल. Yeah, so RR cable, if I see, it is a similar structure. Let me open up the weekly chart. So weekly also, after a sharp downtick from 1700 levels, पिछले 4 हफ्तों से consolidate कर रहा है. There is no major reversal, sideways है. There is no major momentum. So I think इसमें भी 1570 का एक level हमें देखना होगा. उसके ऊपर आएगा तभी हमारा stance change रहेगा इस stock में. नीचे support है, support के पास ही चल रहा है, but there is no major momentum. Also, just to add one more thing, as we are discussing one thing, try to shift your positions to the major selective heavyweights counter. That would be better in this market. और जो भी आपको positions play करनी है, try to play intraday. So I think with that, we haven't given any trade for the Bankex because there is no major momentum. Stock we have discussed Zomato and Coromandel. That is looking good. BTST we haven't shared because as of now there is no major setup, promising setup that we can say there is a sharp uptick. So all in all, this is from our side. Anuj, would you like to add anything?
I don't think so I can add anything from the research point of view, but yes, we are thinking a lot of things. We'll update you soon, probably by Tuesday or maximum by Thursday. We'll update you on the series which we are going to launch because of the change in sessions and which expert will take which one. So that will be all. Thanks a lot, everyone. Thank you, Arpit sir, for joining in. Thank you guys. Thank you all.